हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आसतु आज आम देखा वाटरफॉल इन ओडिशा जोटा कि आमर ओडिशार जेकोसी एग्जाम भी आसी थाए क्वेश्चन वाटरफॉल विषय। तो वाटरफॉल आम ओडिशार जिते सब वाटरफॉल अच्छे आसतु देखा। प्रथम वाटरफॉल इन ओडिशा। The topography of Odisha comprises of highlands, uplands and plateau due to which there are many waterfalls in the state. Important waterfall in Odisha are follow. First होची बड़ घागरा। बड़ घागरा कौन ना this waterfall lies in केउंझर। बड़ घागरा आमर कौटे अच्छी ना केउंझर। दिस वाटरफॉल लाइज इन केउंझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इट इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर ऑन द डाउनस्ट्रीम ऑफ सान घागरा वाटरफॉल। इट इज अबाउट 60 मीटर इन हाइट एंड perennial sources of water. It is a source of a small river that is माछकाडाना। तापर आइला बरही पानी वाटरफॉल जोटा कि इट इज लोकेटेड इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। इट हैज टोटल हाइट ऑफ 400 मीटर। इट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ ओडिशा एंड द सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। द सोर्सेस ऑफ वाटरफॉल इज बुढ़ा बलंग रिवर। बरही पानी वाटरफॉल आमर कौन कौ डिस्ट्रिक्ट रहा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रहा। तो इट इज सेकेंड हाईएस्ट इन ओडिशा एंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन ओडिशा और सेकेंड हाईएस्ट इन कौन इंडिया। तापर एबे देखिबा जोर्डान वाटरफॉल जोटा कि 150 मीटर इज नियर टू एंड बोथ आर इन द कोर एरिया ऑफ सिमिलीपाल नेशनल पार्क। डुडुमा वाटरफॉल कौटी अच्छी ना इट इज लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा स्टेट। इट इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 92 किलोमीटर फ्रॉम कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ओडिशा एंड 177 किलोमीटर फ्रॉम विशाखापट्टनम जोटा कि आमर आंध्र प्रदेश अच्छी। डुडुमा वाटरफॉल कोरापुट डिस्ट्रिक्ट अवस्थित ये टूरिस्ट प्लेस भी। इट इज फॉर्म्ड बाय द माचकुंड रिवर एंड इज अबाउट 170 मीटर हाई एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मत्स्य तीर्थ। It also support the Machkund hydroelectric power project. Then तापर आइला गंडाहाती। गंडाहाती वाटरफॉल कौन दिस वाटरफॉल इज लोकेटेड इन गजपति डिस्ट्रिक्ट। जी फॉर गंडाहाती जी फॉर गजपति डिस्ट्रिक्ट आपण मैंने एमती भी मन रखिपारे। दिस वाटरफॉल इज लोकेटेड इन गजपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इट इज फेमस फॉर इट्स glittering waterfall. The water in the fall remain consistent throughout the year. हरिशंकर वाटरफॉल कौटी अच्छी दिस वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द southern slope of गंधमार्दन हिल इन बलांगीर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। दिस इज प्लेस ऑफ pilgrimage which is famous for the presence of Lord हरि और शंकर। हाथी पत्थर वाटरफॉल कौटी अच्छी ना दिस वाटरफॉल लाइज इन रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इट इज फॉर्म्ड बाय नागबली रिवर। इट इज एन इम्पोर्टेंट पिकनिक स्पॉट फॉर टूरिस्ट इन ओडिशा। देन जोरंधा वाटरफॉल कौटी अच्छी दिस फॉल इज लोकेटेड इन द कोर एरिया ऑफ सिमिलीपाल नेशनल पार्क इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। इट इज अबाउट 150 मीटर हाइट। खंडाधार वाटरफॉल कौन इट इज लोकेटेड इन द मिनरल रिच फॉरेस्ट ऑफ सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। दिस वाटरफॉल इज अबाउट 244 meter is the 12th largest waterfall in Odisha. Another waterfall of the same name also located in Keonjhar district which is about 152 meter height. नेक्स्ट देखा खंडोला वाटरफॉल दिस वाटरफॉल इज लोकेटेड इन करालपट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। द वाटरफॉल गॉट इट्स नेम बिकॉज द साइन ऑफ द गॉडेस खंडोला विच इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल। कोयली घुगर वाटरफॉल कौन ना दिस वाटरफॉल लोकेटेड इन द झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इट इज अबाउट 61 मीटर हाइट। देर इज ए शिवलिंग नोन एज महेश्वर नाथ inside the fall. This fall is in rivulet named Ahiraj which comes out from the Chauki Nacha forest. Mirigoltha waterfall कौन दिस वाटरफॉल सिचुएटेड इन 111 किलोमीटर फ्रॉम राउरकेला इन द सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। द वाटरफॉल इज 100 feet हाइट एंड इज सिचुएटेड बिसाइड द काल्टा आयरन माइन्स।
Nrsimhanath waterfall. This waterfall located close to the Nrsimhanath temple, which is situated at the foothill of Gandhamardana hill in Bargarh district. At Nrsimhanath, other waterfalls are also located like Gadadhara, गुप्तधर, भीमाधर, कालीपधर, चलधर. तापर आइला फुलरी झरन. It is a perennial waterfall which is located around 15 km from Bhavanipatna in Kalahandi state. It is about 16-meter height, famous for tourist sport due to its multicolored rainbow which is created by sun rays falling on the scattered water particles of the fall. Then आइला पुटुडी. पुटुडी waterfall कोठी अच्छी ना. It is located 15 km from Fulbani in Kandhamal district in Odisha. It is formed by Bada Sulki river. Dense forest and hill are situated on the either side of the fall. Then आइला Pradhan Path waterfall. This waterfall is close to Devagad district and is located around 100 km from Sambalpur. It had a fast hydroelectric power in the state of Odisha. Pradhan Path जोटा important waterfall. Sanna Ghagara कौन ना. This is a perennial waterfall. It is situated around 5 km from Keonjhar and district. It is about 30 meter in height. तो ये थिला आमर ओडिशार वाटरफॉल. वीडियो भल लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करंतु. रहुछि नमस्कार. जय जगन्नाथ.